Okay, this is lecture number 6 of quantity survey and cell engineering practice. Don't confuse yourself with this numbering because this is the lecture adopted from one of the lectures of Dr. Syed Mohammad Ali. So, numberings are as per his lectures. So, according to our lectures, and this is lecture number 6. This lecture will be about claims, arbitration, litigation, escalation, indexation, depreciation, sinking point, and valuation. These are some miscellaneous topics which are important for you people to understand what they are, or just if I say I'll introduce yourself, you people with these topics, so it will be good because these topics can be studied in detail, and each individual topic can take a whole lecture. So I'll not go into detail of these topics. I'll just introduce what they are. So we know what is the meaning of claims. क्लेम किसे कहते हैं? सिंपल इंग्लिश में नो आइडिया. सर कोई चीज क्लेम करना मतलब कोई चीज डिमांड करना. पोजीशन सर. ठीक है, आप किस चीज का हक बनता है एंड यू आर डिमांडिंग दैट थिंग. So this is the basic or simple meaning of the claim. So as you people know that when a civil engineering project gets started, there's some contract, there's some type of contract between the contractor or consultant with the client. Okay? There will be a contract. So this contract will be on some terms and conditions. Also, when the contract is awarded, this contract is awarded on the basis of the quoted rates during the bidding process, which we have already discussed in the previous lectures. So, जो कॉन्ट्रैक्टर कोट करता है रेट, तो उसके हिसाब से उसको फिर पेमेंट की जाती है. बट देयर आर सम कंडीशंस during which जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में, तो चीज़ें उससे ज़्यादा तंजीम हो जाती हैं या उससे ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है या कि कुछ चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं या कुछ सिचुएशन ऐसे हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने लाइक एग्रीमेंट किया था कि आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 2 years, बट ड्यू टू लेट्स से कोविड-19 आ गया, तो उसकी वजह से लॉकडाउन हो गया है 6 months और 4 months, जिससे प्रोजेक्ट डिले हो गया. तो अब आपने 2 months में कंप्लीट नहीं किया वो प्रोजेक्ट, तो डॉक्यूमेंट्स में आप जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इट वाज अबाउट 2 months के सॉरी 2 years के आपने 2 years में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया. In that case, the contractor can claim his extra money or his extra time, or he can request for or he can claim for extra time which will be required to complete the project due to unusual circumstances. So this is basically called as claim. So if we look at the definition of the claim,
claim is any notification or request by the contractor for payment additional to the envisaged in the contract. The contract में आपके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई थी, उनके अलावा आप एडिशनल पेमेंट मांग रहे हैं, which comprise the contract or for payment additional to the envisaged in the contract for measured work and other items which comprise the contract sum, or for additional time to complete the project. तो दो चीजें यहाँ पे आप उसको टारगेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट और एक्स्ट्रा टाइम. So simply if you are claiming something and the owner is agreed about that claim that okay, you deserve this claim and he will process that claim, so it is okay, the issue is sorted out. But if the owner is not agreeing with your point of view and he thinks that this delay is not due to COVID-19 and it is due to the negligence of the contractor, so definitely he will not accept the claim. But you are thinking that you are assuming that this delay is due to COVID-19. So there is a dispute now. This is basically now called as dispute. तनाज़ा इसको कहते हैं. तो यहाँ पे अब आपके कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में डिस्प्यूट आ गया. तो डिस्प्यूट कब आता है? जब आपका क्लेम जो है वो क्लाइंट उस पर एग्री नहीं करता एंड he does not accept your claim. Now, in most of the cases, when the claim of the contractor is very small and the client is not accepting the claim, so there are contractor का claim इतना significant नहीं है और client जो है accept नहीं कर रहा, तो most contractors क्या करते हैं कि they step back from their request. तो कि legal action लेना मुनासिब नहीं समझते against the client because they may lose their position in the future bidder list. फ्यूचर में जब इसी क्लाइंट के पास और प्रोजेक्ट्स आएंगे तो वो क्लेम की अमाउंट इतनी बड़ी नहीं है कि वो अब अगर उनके साथ ताल्लुकात के क्लाइंट से रिलेशनशिप है तो वो अगर लीगल एक्शन लेके उस रिलेशन है उसको खराब करते हैं एंड देन इन द फ्यूचर व्हेन देयर इज अनदर प्रोजेक्ट विद दिस क्लाइंट, so that will be affected due to their year. क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा कि they have a clash and it was taken to the court. So this was about when the claim was not accepted by the contractor, so the client. But what if the claim is accepted by the client? So when the claim is accepted by the client and he thinks that the contractor deserves this thing and this was actually happened, so this basically takes the shape of a variation order or change order. So the order is changed and he's made, the contractor is paid for the extra time or extra money. So
there any question till this point? No, sir. Okay. So after this, we will discuss some standard operating procedures of SOPs for settlements of the disputes. So each and every department will have their own procedures that who will sort out the issues with the clients and contract between the client and contractors. So just for an example, we'll discuss these SOPs taken from the National Highway Authority (NHA). So when there is a claim in the National Highway Authority, so what will be the step number one? The claims will be received by the operation wing of NHA. There is an operation wing in NHA who will receive the claims, and these claims should be submitted along with the engineer responsible engineer. His point of view or decision must be written on the claim, and along with the review of the supervisory consultant as well. In addition to the engineer and the supervisory consultant, the project director and concerned official of NHA from office of the concerned GM, he should also endorse his recommendations on the claim before submitting to the operation. So when the claim is submitted along with all these requirements, the requirements are the comments from the engineers, which are responsible along with the comments or recommendations from the supervisory consultant, and also the comments or recommendations from the project director or the GM of the concerned office. So when the claim is received by the operation wing along with all these requirements, the operation wing will review the case, and if they find that this case is genuine, then they will forward it to the contract section. Sorry, there is some spelling mistake here. This is not contractor section, this is actually contract section. So from here, it starts the step number 2. The contract section will review the claims in light of the contract administration reports. जो डिपार्टमेंट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनके बिहाफ पे वो उनको बेस बनाते हुए जो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन है वो उस केस को रिव्यू करेगा, एंड the contract section will identify the any issue in the case, and also he'll identify the section will identify the any action which can be taken from the department. So they'll give the option, the legal option or the options which are possible as per the rules and the regulations of the department. So so this section will identify those actions which are possible. So after reviewing and identifying the options, the contract section will prepare a working paper. This section will prepare a document which will contain the details, what was the issue and what are the possible actions or solutions within the terms and conditions or within the rules and regulations of the department. And they will prepare a review paper for the first stage committee. So the third step number 3 is about the first stage committee. The first stage committee shall meet and deliberate on the claims and submit its recommendation to the second stage committee.
So the first stage committee will review the comments presented from the they will review the working paper submitted by the contract section, and they'll submit this document or working paper to the second stage committee along with their recommendations. Second stage committee will again review the whole case, and if they find if they don't find any issue in the case, they'll submit or they'll recommend the case to the chairman of the NHA for the approval. Now, if the chairman feels that the whole process was clear and there was no issue or any ambiguity, so he may approve the claim, or otherwise he can he can decide to review the whole case by any other form. So once approved by the chairman, the payment shall be made as per the prevailing procedures as amended from the time to time. So once the chairman has approved the document, so the payment will be released for the contractor. Now there is some information about the constitution of the first stage committee. In the first stage committee, these three members will be participating. Number first is the representative of the contract section to be nominated by the GM contracts, representative of the accounts wing to be nominated by GM finance, and representative of the operation wing to be nominated by GM operations and coordination. So this was a sample SOP which is used for the settlement of the claims. So if you have any confusion or comment or question, you can please ask. Otherwise, we'll proceed to the next topic. सर लेट्स से अगर किसी प्रोजेक्ट में टेक्निकल कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच, तब कैसे रिजॉल्व करेंगे वो? टेक्निकल मींस लेट्स से सर एक बिल्डिंग का डिजाइन है, उसने हम लोगों को मतलब बार साइज में डिफरेंस आ जाए या डिमांड ज्यादा है और बार कम दिए हुए हैं, ऐसा कुछ वो आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो फिर नहीं ये तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये तो आपने अगर डिजाइन में एक चीज गिवन है और कॉन्ट्रैक्टर ने वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं की फील्ड में, then the client will have the right to demolish the thing and ask the contractor to rebuild the structure. Clear? अगर इस तरह की आपकी बात करें कि डिजाइन में एक चीज थी, अगर मैं आपका क्वेश्चन मैं समझूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर डिजाइन में एक चीज है और कॉन्ट्रैक्टर ने इम्प्लीमेंट नहीं की, तो इस बात पे क्लैश है, तो इस बात पे तो सिंपल सी उसके पास अथॉरिटी है क्लाइंट के पास के अगर जो इंजीनियर सुपरवाइज कर रहा है क्लाइंट की तरफ से, या क्लाइंट ने कंसल्टेंट्स हायर किए हुए हैं फॉर सुपरविजन, इन बोथ ऑफ द केसेस कंसल्टेंट के पास भी राइट है और क्लाइंट के पास भी राइट है कि वो इंस्ट्रक्ट करें कॉन्ट्रैक्टर को कि यू शुड डिमोलिश दिस थिंग, एंड बिकॉज द reinforcement is less than the recommended in the design. So this is very simple. ठीक है सर। और ऐसा होता भी है क्योंकि
जब मैं साइट पे था, आई वाज वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर विद द कंसल्टेंसी ऑन अ सुपरविजन प्रोजेक्ट। तो हम अक्सर जो है वो तकरीबन 2 या 3 बार कॉन्ट्रैक्टर से एक कॉलम डिमोलिश करवाया था, बिकॉज एक बार तो वो आउट ऑफ प्लम था। आउट ऑफ प्लम, आई होप यू नो व्हाट इज आउट ऑफ प्लम। सर आउट ऑफ प्लम का क्या मतलब? इट वाज नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल। अच्छा सर जी। कॉलम शुड बी एग्जैक्टली वर्टिकल, ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि इफ इट इज टिल्टेड ऑन वन साइड, अगर वो एक तरफ उसका झुकाव है, तो when the load comes and if you know about the P delta effect, when the column is vertical, exactly vertical, so and the load is eccentric on it, the load is acting on its center, तो कॉलम जो लोड रेजिस्ट कर रहा है या कॉलम में जो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो दैट विल बी ओनली एक्सियल फोर्सेस। बट if you are if your column is in tilted position, वो एक तरफ झुका हुआ है, in that case there will be some distance between the point of application of force and the base of the column, and this distance will cause some moments, additional moments. And when the load is applied and these moments are also produced, bending moments are also produced, so the column may deflect more towards the deflected position. तो जब वो मजीद डिफ्लेक्ट होगा, मजीद उसका डिस्टेंस बीच में इंक्रीज होगा उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड उसके बेस के बीच में, तो मजीद जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू मोमेंट आर्म। डिस्टेंस आप इंक्रीज कर रहे हैं तो मोमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, एंड मोमेंट इंक्रीज होगा तो फिर जो है डिस्टेंस इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन। जब दोबारा डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फिर मोमेंट इंक्रीज होगा, तो that cycle will continue and the column may collapse. So this is basically called as Peter effect. तो अगर आपके implementation में कोई issue है, कोई genuine issue है, then the consultants can instruct the contractor to demolish that thing. Yes sir, समझ। अच्छा, फिर दूसरा ऑप्शन ये भी आता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट की बात नहीं मानता एंड वो डिमोलिश नहीं करता, तो कंसल्टेंट क्या करेगा? उसके गिरेबान में हाथ डालेगा, उसको लड़ाई झगड़ा करेगा, क्या करेगा? नहीं, तो सिंपल जो है वो लेटर लिख देगा क्लाइंट को, ठीक है। और ये लेटर जो है, लेटर लिखना क्लाइंट को इस बात पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो काफी जो है माइंड करते हैं या आप कह रहे करते हैं, जैसे कि पुलिस को रिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर, उस प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट्स उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहे हैं फ्रॉम द क्लाइंट साइड। क्लाइंट ने कंसल्टेंट्स को हायर किया हुआ है टू सुपरवाइज दैट प्रोजेक्ट। तो अगर आप काम ठीक नहीं करते और कंसल्टेंट्स आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसा करें, एंड आप उनकी इंस्ट्रक्शंस भी नहीं मानते, देन contractor the consultants will write a letter to the client that these are the instructions and the contractor is not fulfilling these instructions. तो वो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट आपके ऊपर एक्शन लेता है। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब कॉन्ट्रैक्टर इस क्लाइंट के पास प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसकी प्रोफाइल बनी होती है सारी उनके पास, तो उसमें इनको इन्वेस्टमेंट में और बाकी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं
कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो इस चीज को अवॉइड करते हैं कि कंसल्टेंट्स हमारे ऊपर लेटर ना लिखें। Okay, let's talk about the escalation. So escalation is the increase in price, especially due to inflation. Okay, what is inflation and deflation? Any idea? Yes, sir. Inflation is actually a devaluation of the state's money, and डिफ्लेशन सर के जो मार्केट में रेट्स कम हो जाते हैं और जो स्टेट का जो पैसा है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक, good. So escalation is something when the prices are increasing, but the prices are increasing, but inflation is also the same thing. When the prices are increasing, the increase of price and some decrease of prices. But the difference in the escalation and inflation is कि escalation जो है, that is when we talk about the escalation, this is about a specific product or a set of products, not a general thing. But inflation जो है एक general thing है, एक general term है. Inflation is like आप जब normally सुनते होंगे कि महंगाई की शरह इतनी बढ़ गई है या इतनी कम हो गई है, तो that is something inflation. These things, this percentage will cover and it will take an average of the increase in prices of all of the items. But when we talk about the escalation, this will cover some specific items, for example, cement or steel or anything else, or wood, etc. The cost escalation is defined as changes in the cost or price of specific goods or services in a given economy over a period. Many building owners, developers, and public entities want to know that what their project might cost in future. So the cost escalation is the study of providing an educated percentage to be added to the base cost project estimated at today's market value to know what its future value might be. तो आपने लेट्स सपोज 2005 में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, ठीक है. Now if you want to construct the same building in 2020, तो अब कितना उस पे कॉस्ट आएगा, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दिस इज बेसिकली the calculation or the estimation of the cost, or you can say calculation of the some educated percentage which should be added to the base cost. The base cost क्या? Let's say आपने जो 2005 में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी, उसका जो कॉस्ट है वो बेस कॉस्ट है. तो आप कितने परसेंट इसमें मजीद ऐड करेंगे ताकि आपको 2020 में इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट मिल जाए, तो दैट विल बी termed as cost escalation.
Here's an example of which is showing you the difference between the inflation and the escalation. For example, the general inflation or consumer price index in the US was less than 5% in the 2003 and 2007. But the steel prices were escalated by over 50% because the supply and demand imbalance. So you can see that the मैंने बात की कि महंगाई की शरह, that is something or inflation is some general term. So this is saying that the increase of prices in general terms that was less than 5%. But when we talk about any specific product or item, so let's we are talking about the steel, so the prices of steel were increased by 50%. And this escalation may result in the cost overrun. Do you know what is cost overrun? No, sir. Cost overrun and time overrun. So when let's say if a project is estimated, it is estimated for a project that it will cost, let's say, 1 lakh rupees, and when the project is completed or it is in progress and 1 lakh rupee is already spent and 20% of the work is still remaining. So when the project is finished, it costed, let's say, 1,50,000 rupees. So this is basically cost overrun because the cost, the estimated cost is now less than the actual cost. Actual cost has exceeded the estimated cost. So this is basically called as cost overrun. Similarly, time overrun means when the actual time exceeds the estimated time. So this is basically called as time overrun. Okay, before going ahead, I'll let me introduce to you people with the contingency. What is contingency? If anyone know, please tell us. नहीं आता सर. Okay. जब आप प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप मेन आइटम्स के कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और एस्टिमेट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, एक्सकवेशन हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, स्टील हो गया, वुड वर्किंग होगी, पेंट्स होगी. दीज आर द मेन आइटम्स. बट द कॉस्ट is not just limited to these items. जो छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपने कोई स्टील आपस में टाई करना है, तो उसके लिए आपको बाइंडिंग वायर चाहिए. उसको आप डायरेक्टली एस्टिमेट नहीं कर सकते. इसके अलावा आपको लेट्स से कहीं पे हील्स लगाने की जरूरत पड़ती, मेखें, ठीक है, तो वो मेखें पैसों से आएंगी ना. तो अब वो आपको तो पता नहीं है कितनी लगेंगी, कितनी उनमें से बेंड हो जाएंगी. सिमिलरली कहीं पे लेट्स से क्यूरिंग के लिए पानी खत्म हो गया, तो आप कहीं और से उस टाइम फिर आपने इमरजेंसी में वहाँ पे कहीं और से वाटर टैंक बुलवा लिया, वहाँ से आपने पानी जो है वो प्रोवाइड किया क्यूरिंग के लिए. अब इसका कॉस्ट कौन देगा? तो ये तो आपने बिल में क्लेम ही नहीं किया था. तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें, या आप कह लें जो आपने चौकीदार रखा हुआ है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है जो रात को सामान की हिफाजत करे यहाँ पे साइड पे,
तो उसकी सैलरी कहाँ से आएगी? तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, तो इन चीजों को एस्टिमेट करना इतना इजी नहीं होता, आपको अंदाजा नहीं लगता। तो these things are normally estimated in the contingency। अब इनको एस्टिमेट कैसे किया जाता है कि अगर लेट्स से प्रोजेक्ट का कॉस्ट आ रहा है, मेन आइटम्स का जो कॉस्ट आ रहा है लेट्स से 1 लाख रुपीज है, तो आप कहते हैं कि contingency जो है 2%, 2% ऑफ द कॉस्ट इज कंटिजेंसी कॉस्ट। तो आप क्या करते हैं कि 1 लाख रुपी जो टोटल कॉस्ट आ गया, उसमें 2% ऑफ दी 1 लाख कितना हो गया? 2000। तो 2000 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, 2000 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए तो आपका टोटल कॉस्ट हो गया, ग्रैंड टोटल जो हो जाएगा वो 1 लाख एंड 2000 हो जाएगा। ये टोटल आपने एस्टिमेट हो जाएगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कंटिजेंसी फंड। तो आइडिया बन गया होगा दिस एस्केलेशन फंड एंड दी एस्केलेशन फंड भी एक रिस्क फंड है और कंटिजेंसी भी एक रिस्क फंड है, क्योंकि इन दोनों का पता नहीं चलता कि ये कब इंक्रीज हो जाए या कब डिक्रीज हो जाए, और कब जो है बजट जो कॉस्ट एस्टीमेट है उसको ओवररन कर दें, कॉस्ट ओवररन इंड्यूस कर दें प्रोजेक्ट में। तो दीज आर termed as risk funds, or sometimes they are estimated together। जब कंटिजेंसी थोड़ी होती है, सॉरी, जब एस्केलेशन इज एक्सपेक्टेड टू मिनिमम, तो they are calculated or estimated together, otherwise इन दोनों को separately डील किया जाता है। Give me a minute, I will be back in a few minutes.
Okay, so we were discussing the escalation. Okay. So here's an example of the variation between the rates. Look at this table. अब यहाँ पे जो are you listening to me? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यहाँ पे प्राइस वेरिएशन जो है सीमेंट की शो की गई है for RC, which is done in the ratio of 1:1 for girders. So the tender date is 15/6/2011. So when the tendering was done, तो जिस डेट पे टेंडर हुआ था वो डेट है 15/6/2011 एंड अब जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है. These are the months of the billing. किस मंथ का बिल आप सबमिट कर रहे हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर. तो लेट्स से हम जनवरी 2012 की बात करते हैं. And this month, the quantity of concrete was this much, and the total number of bags estimated were 537.1. So total bag, not estimated, total bag number of cement bags consumed are 537.1. Rate at the time of tender. जब आपका टेंडर हुआ था उस टाइम सीमेंट की प्राइसेस जो थी 385 रुपीज थी. तो आपने जो रेट कोट किया होगा, जाहिर सी बात है आपने इस बेस पे आपने रेट कोट किया होगा एज अ कॉन्ट्रैक्टर. और जबकि अब जो सीमेंट की प्राइसेस है वो जनवरी में 420 रुपीज हो गई है. ठीक है. तो आपका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द सीमेंट प्राइस वो कितना आएगा. लेट्स से डिफरेंस कितना है इन दोनों में. 385 420 minus 385, so the difference is 35 rupees. तो इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. 385 क्योंकि आपने इस बेस पे आपको ये आपने ये रेट कोट किया. लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आपका कॉस्ट आ रहा है 35 रुपीज, दिस थिंग यू कैन क्लेम. So 35 multiplied by total cement bags. So 35 multiplied by 537.1. So you will get 18,799 rupees escalation amount. Similarly, for the month of February, March, April, आपने इसी तरह आप कर सकते हैं. Let's say rate at the time of tender was this much, 385. और अप्रैल में इसका सीमेंट बैग का रेट हो गया 430 रुपीज. डिफरेंस कितना है रेट में. 430 minus 85, 45 रुपीज. और 45 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स. तो आपका इस आपकी एस्केलेशन अमाउंट आ रही है 96,679 रुपीज. So this extra amount you can claim from the client. Also, EC is also providing some formulas for adjusting the price for the escalation amount, and some departments are adopting these formulas as well. I'll not go into detail, and this course is not these details are out of scope of this course. So just I'll introduce a little bit to this formula. Let's say the PN is the adjustment factor जो आपको मल्टीप्लाई करना होगा बेस कॉस्ट के साथ, and you will get the escalation cost. So this is the formula. तो इसमें जो कुछ ये डिवीजन में आपको फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, ये वैल्यूज नजर आ रही हैं. These are the ratios of the original cost and the cost of the item at the time of tender. Let's say अगर मैं बात करूं LN और L0 की, तो LN is the labor cost, which is current labor cost, and L0 is the basic rate at the time of
फ्रंट में, तो उन दोनों की रेशो यहाँ पे आ जाएगी एंड वेटेज पी, ये कुछ वेट्स असाइन किए हुए हैं, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस रेशो के साथ। सिमिलरली एम एन डिवाइड बाई एम नॉट जो भी है, ये मेसन कॉस्ट है जो भी है, सिमिलरली ई एन डिवाइड बाई ई एन नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाय द रेलेवेंट weight factor. So doing this calculation, you can estimate the adjustment factor En, which can be multiplied with the original cost and to get the escalation amount. Now let's proceed towards the next topic, which is the indexation. So Excuse me, sir. yes, please. सर अगर सीएसआर मतलब अगर एक प्रोजेक्ट के लिए सीएसआर इश्यू हो जाए और फिर मतलब कंस्ट्रक्शन के वक्त रेट बढ़ जाए, मतलब ये जो मटेरियल इसके रेट बढ़ जाए, तो फिर डिपार्टमेंट वो इश्यू मतलब वो देगा कि नहीं देगा वो पैसे? जी देता है, यही चीज तो एस्केलेशन है ना, यही चीज तो हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एस्केलेशन अमाउंट। तो आप एस्केलेशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर, अभी यहाँ पे जो लेट से हमने पिछले टेबल में ये कैलकुलेट किया, ठीक है? यस सर। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एस्केलेशन अमाउंट। आपका टेंडर के टाइम जब आपका रेट, अब लेट से सीमेंट बैग है, सीमेंट बैग जो है टेंडर के टाइम जो है आपका इसका रेट था 385 रुपीज रेट एट द टाइम ऑफ टेंडर। लेकिन जब आपने काम शुरू किया, जब टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हुआ, डॉक्यूमेंटेशन सारी हुई, साल 2 साल हो गए, आपका जब प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली स्टार्ट हुआ, वो सीमेंट्स आप खरीद कर लाए, तो वो उनकी कीमत जो थी वो 420 रुपीज थी जनवरी 2012 में। अभी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो आप क्लेम करेंगे, देखें यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कॉस्ट कैलकुलेट करें, आपके 18,799 रुपीज जनवरी में आपका आया, फरवरी में आपका 77,000 रुपीज एक्स्ट्रा आया, 69,000 रुपीज आपका मार्च में आया। तो ये चीजें आप क्लेम करें, ठीक है? जी सर, लेकिन सर सीएसआर में वो लोग रेट अगर मतलब हमारे से मार्केट शेड्यूल में जो है ना वो 420 से मतलब सीमेंट बैग होगा, तो वो सीएसआर में ऑलरेडी मतलब 500 तक इशू करेगा, मतलब 500 रेट देगा। लेकिन फिर अगर रेट बढ़ जाए तो उस रेशियो के साथ हम एस्केलेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? देखें वो जो मतलब अगर 520 से कम, अगर 520 से कम हो और मतलब 420 से ज्यादा हो गया हो, जो सीएसआर कहते हैं किसे, इसको फुल फॉर्म क्या है? सीएसआर आई थिंक सीएसआर आई थिंक कंस्ट्रक्शन शेड्यूल रेट एक क्या है, एब्रिविएशन है, कंपोजिट शेड्यूल ऑफ रेट्स, ठीक है? अब इस कंपोजिट का क्या मतलब है? अगर आपके मार्केट में जो नॉर्मली आप स्टील परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्टील अगर आप परचेज करते हैं तो वो आपका आ रहा है लेट्स से 1 लाख रुपीज पर टन। आपको सीएसआर रेट दिया होगा वो हो सकता है 1,40,000 रुपीज पर टन दिया। यस सर, बिल्कुल सर। अब ये इसका पर्पस क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, ये आपको ये सारा का सारा प्रॉफिट नहीं दे रहा, ये एक्चुअली आपका कंपोजिट रेट है। कंपोजिट मतलब ये सब चीजों को मिलाकर। तो कॉन्ट्रैक्टर जब ये कोट करता है कि मैं 1,40,000 रुपीज एज पर दी ये सार मैं ये करूंगा, तो इट मीन्स के 1,40,000 में आपका स्टील परचेजिंग कॉस्ट, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसका लेबर कॉस्ट जो स्टील फिक्सर लगता है, जी सर, लेबर कॉस्ट मींस कि उसके ऊपर जो बेंडिंग या आप जो उसको शेप में प्रॉपर शेप में लाते हैं बिफोर इंस्टॉलेशन, लेबर कॉस्ट है मेरा मतलब ये। तो उसका जो खर्चा, इसके अलावा इसमें जो वेस्टेज आ रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक स्लैब में जो एक स्टील बार होता है वो 40 फीट का होता है ना, तो बिल्कुल सर,
तो अगर एक स्लैब है वो या एक बीम है वो 38 फुट की है, ठीक है, तो 48 फुट में से यस सर। 48 में उसमें वो 38 फुट उसमें से काट लेंगे और 2 फुट बच जाएगा। अब ये 2 फुट तो कहीं पे इस्तेमाल करनी है, तो ये वेस्ट हो गया। तो ये जो वेस्टेज है तो ये भी इंक्लूड होती है इसमें। तो ये जो कंपोजिट रेट होता है इट मीन्स कि ये हर चीज का कंपोजिट है, तो आप डायरेक्टली इसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू सर। So we are talking about the indexation. So indexation is a टेक्निक या एक अप्रोच कह लें जिसकी 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 मदद से जो गवर्नमेंट्स हैं वो जब इन्फ्लेशन होती है तो वो अपने पब्लिक को उस इन्फ्लेशन के इफेक्ट से बचाती है। कैसे बचाती हैं? फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई एंड द प्राइसेस ऑफ द आइटम्स, household items are increasing. So the government should increase the salaries of their employees as well. So the when they lock the salaries of the employees with the price index, कि जब महंगाई ज़्यादा हो तो सैलरीज भी ज़्यादा हो, तो this is basically called as indexation. So what is the actual definition, or you can say book definition? A system of economic control in which certain variables such as wages and interest are tied to a cost of living index so that they both rise or fall at the same time, and the detrimental effect of inflation is theoretically eliminated. So when these cost of the items are increasing, the salaries of the employees should also be increased. Then the de-indexation is the inverse of this thing, and this is basically जब आपकी कंपनी, आपकी जब कंट्री के हालात बेहतर हो रहे होते हैं और आपकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, महंगाई कम हो रही होती है, तो अगर आपकी सैलरीज उतनी ही रहेंगी तो that will be a burden on the government, क्योंकि अब आपकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो in that case they may reduce the salaries or wages. So this is basically called as de-indexation. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि लेट्स से आपने एक प्रॉपर्टी ली हुई है back in 2010 and you are selling that property in 2020. आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी 1 लाख रुपए में एंड आप उसको सेल कर रहे हैं 2 लाख रुपीज में, ठीक है। आपने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कर दिया। दिस प्रॉफिट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल गेन। इफ यू आर लूजिंग, आपको नुकसान होता है उस प्रॉपर्टी में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस। अब जो आपको प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपए, तो आपको उस पर टैक्स भी देना होगा, गवर्नमेंट टैक्स। तो दैट टैक्स विल बी बेसिकली कॉल्ड एज कैपिटल गेन टैक्स। तो पॉइंट ये है कि आपने जब 2010 में वो प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो उस टाइम आप बाजार जाते थे तो आपको 20 रुपए में या 50 रुपए में आपको 1 किलो दूध मिल जाता था। और अब 2020 में जो है आप बाजार जाते हैं तो 130-140 रुपए में 1 किलो दूध है। इसका
इसका मतलब क्या है कि आप 2010 में जब आपके पास 50 रुपए होते थे तो आप 50 रुपए उसके 1 किलो दूध के वैल्यू के बराबर है। अब जो है आपकी 120 रुपए 130 रुपए आपकी 1 किलो दूध के वैल्यू के बराबर है। इट मीन्स कि आपकी वैल्यू ऑफ द करेंसी है दैट इज रिड्यूस। अगर इस चीज को आप अपनी प्रॉपर्टी पे अप्लाई करें तो इट मीन्स कि अगर आपने 1 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी ली है 2010 में एंड आपने सेल की है 2 लाख रुपीज में, इट डजंट मीन कि टोटली आपने 2 लाख रुपीज जो 1 लाख रुपी इंक्रीज आया है 1 लाख रुपी इंक्रीज जो है वो टोटल एंटायर आपका प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि आप अगर आप 2020 में वही प्रॉपर्टी लेते हैं तो हो सकता है आपको ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़े। समझ आई? तो अगर आप तो वो टोटल प्रॉफिट नहीं है तो आप टोटल पे टैक्स क्यों दें? दिस इज द पॉइंट। ये सिचुएशन समझ आई आपको? नहीं आई? यस सर। सर इस केस में तो ये तकरीबन अगर बाकी चीजों के रेट के मुताबिक लगाया जाए तो ये तो लॉस हुआ। ये मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने 2 लाख रुपीज की सेल की है तो आपका उसमें 1 लाख रुपी जो इंक्रीज है तो दैट इज नॉट द एक्चुअल, दैट इज नॉट योर एक्चुअल प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। आपको इस फुल अमाउंट पे टैक्स नहीं देना। आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि अगर आप वही प्रॉपर्टी आप आज के दिन पे लेते तो इसकी कितनी कॉस्ट होती। वो कॉस्ट माइनस वो उस कॉस्ट की बेस पे आप जो उस कॉस्ट की बेस पे जो आपका प्रॉफिट होगा तो सिर्फ उसी पे आप टैक्स देंगे। तो दिस इज एक्चुअली अलाउड इन द इनकम टैक्स लॉज। ठीक है? एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इंडेक्सेशन। अच्छा, अब क्या होगा कि हर एक कहेगा कि भाई मेरी तो आज मेरी प्रॉपर्टी की आज की कीमत 180 है, कोई कहेगा 190 है, कोई कहेगा 170 है। तो ऐसा नहीं है। आप ये कॉस्ट टुडेज कॉस्ट आप कैलकुलेट करंट कॉस्ट आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। इन्फ्लेशन इंडेक्स कहाँ से आएगा? दिस इज published or notified by the government every year or every month as per the Pakistan Bureau of Statistics. तो इन्फ्लेशन इंडेक्स को यूज करते हुए आप जो है वो करंट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। So let's look into an example for this. For example, आपने the date of investment is let's say 1st January 2017 and the amount you have invested is 10 lakh rupees. Now in the 1st January 2018 you are selling that property and 11 lakh rupees. Okay, so total gain before indexation is 1 lakh rupees. 1 lakh rupee increase आ गया ना? Okay, so inflation index notified by the government in the financial year of investment was to 10.94 and the inflation index during the financial year of maturity at in which you are selling the property or you want to sell the property or you can say you want to know the cost of the property in that year, so that is 220.27. So the difference is difference in percentage difference is 4.42% between these two values. How you can obtain 220 this percentage 220 minus 220.27 minus 210.94 divided by 220.27 and multiplied with the 100. So this is 4.42% increase. So you can increase the cost of your property or investment
by 4.42%. So this becomes 10 lakh and 44,200 rupees. So this is your actual cost, and now your based on this cost, your net profit is 55,800 rupees, not 1 lakh. So you have to pay income tax on the 55,800. ये इन्फ्लेशन इंडेक्स कहाँ से पता चलता है? स्टॉक मार्केट से? गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। अब गूगल पे लिखा है इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर दिस ईयर पाकिस्तान, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। Okay, our next topic is depreciation. इसको भी हम इनकम टैक्स से रिलेट कर सकते हैं in a sense के let's say you are owning a company and you have purchased an excavator for rupees 50 lakh rupees. ठीक है, तो जब 5 साल बाद आप टैक्स दे रहे हैं and you are calculating the total property you are owning, तो आपने 50 लाख रुपीस का जो एक्सकेवेटर लिया था दैट इज नाउ नॉट कॉस्टिंग, और उसकी वैल्यू अब 50 लाख रुपीस नहीं होगी बिकॉज इट इज यूज्ड एंड इट इज कुछ वेयर एंड टियर हो गया होगा उसमें, जो भी है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रिड्यूस हो चुकी होगी आफ्टर 5 years। हो सकता है आप जब उसको सेल करें तो वो हो सकता है आपका 35 लाख रुपीस का सेल हो। तो this decrease in price of an item with the time, with the passage of time, is basically called as depreciation. तो 5 साल बाद अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो आप टोटल प्राइस पे नहीं बल्कि जो डिप्रिशिएटेड प्राइस है उस पर आप टैक्स देंगे। अभी आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आपकी कौन सा आइटम कितने साल बाद कितने क्या वैल्यू रखता है, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड एंड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। So you'll study these topics in your project or engineering economics course. I guess this will be in your 8th semester, but let me introduce you people with just this straight line method. This is the simplest method for calculating the depreciation amount. For example, if you're buying an item and it is costing you, let's say, $900, and it has a useful life of 5 years. आपने लेट्स से एक आइटम लिया है $900 का और वो यूजफुल लाइफ जो है वो 5 years है। अब 5 साल के बाद आप जब उसको सेल करेंगे तो वो तकरीबन $70 का सेल होगा, आपको इतना अंदाजा है, क्योंकि वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ उसका जो स्क्रैप एज अ स्क्रैप सेल होगा, तो आपको अंदाजा है कि कितने रुपीस का वो सेल हो गया, कितने डॉलर्स का वो सेल होगा। अब आप एस्टिमेट करना चाह रहे हैं कि हर साल इसमें कितना डिक्रीज आ रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन मेथड में हम अज्यूम करते हैं कि दिस डिक्रीज इज लीनियर, ये हर साल इक्वली डिक्रीज हो रहा है। तब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? DT is the amount which is decreased every year, and this will be equal to P minus S. P is the original cost minus S is the salvage value. Salvage value means कि जो after the useful life उसकी क्या value है। P minus S divided by number of years और total useful life उसकी क्या
तो 5 है. So on this, putting values in this formula, you'll get $166 each year. आप एक टेबल से बना सकते हैं कि ईयर 0 में इसकी जो कॉस्ट थी, इनिशियल कॉस्ट इसकी $900 है. फर्स्ट ईयर में इसकी कॉस्ट जो है $900, डिप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो $166 है. So at the end of first year, this will be having a value of $734. Then $734 minus $166, you will get $568. Similarly, again 568 minus 166, $402. At the end of this is at the end of 3 years. This is at the end of 4 years, and this is at the end of 5 years. So we have already हमें ऑलरेडी पता था कि 5 साल बाद इसकी सैलरी वैल्यू जो है $70 है. आपके पास 70 आ रहा है, और टोटल डिप्रिसिएशन, टोटल डिक्रीज इन द वैल्यू इज $870. Is it clear? Yes, sir. Okay. Then our next topic is sinking fund. उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं for explaining this sinking fund. Again, I assume that you people are owning a company, और आपने एक्सकेवेटर लिया था, ठीक है. उसकी एंड यूजफुल लाइफ जो थी वो 10 इयर्स थी या 15 इयर्स थी, व्हाटएवर. अब 10 इयर्स के बाद या 15 इयर्स के बाद जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, तो आपको दोबारा एक एक्सकेवेटर लेना पड़ेगा. तो क्यों ना उसके लिए उस टाइम जब उसके लिए आप पैसे अरेंज करें, तो क्यों ना उसके लिए आज से ही पैसे अरेंज करना शुरू कर दिया जाए. एंड एवरी मंथ आप कुछ ना कुछ एक बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें डिपॉजिट करते रहें एवरी मंथ, और उस पर कुछ इंटरेस्ट भी आएगा. तो आप कितने अमाउंट मंथली डिपॉजिट करें ताकि आपको 10 साल बाद या 15 साल बाद कितने पैसे मिल जाएं कि आप वो जो एक्सकेवेटर है दोबारा परचेज कर सकें. So this is basically called as sinking fund. So sinking fund, a fund or account into which a person or company deposits money on regular basis in order to repay some debt or other liability that will come due in future. What is sinking fund factor? So this factor highlighted in blue color is called as sinking fund factor. So this is the cash flow diagram of this sinking fund. For example, at year 0 or at first month, you have deposited some amount. At second month, you have deposited some amount. At third month, you have deposited some amount, and up to end months, you have deposited some amount. This amount is basically A. After n months, you got huge amount, which is F, and you can now purchase the excavator. So how you will calculate A, the amount which you have to deposit monthly in that account? You can calculate this using this formula. In this formula, this F is showing you the total amount of total cost or total amount you need at the end of n number of years. Or you can say n number of intervals. I is the interest rate.
So if you put these values, for example, if the final cost or F is 1 lakh dollars, and you want this money after this amount after 8 years, and the interest rate is 7%. So how much money you should deposit in that bank account annually? This will be F to I divided by 1 plus I raised to power n minus 1. Put values in this formula, and remember, you should not put 7 directly into the I. You should put 0.07, because this is percentage. So, convert this into fraction and then put it into this formula. So you'll get $9,746 per month. So depositing this much amount per year. So depositing this much amount every year in that account, you'll get $1 lakh after 8 years. Is it clear? Yes, sir. Then comes valuation. Valuation is basically determining the value of any property or any company, etc. So let's say I have a company जो कि मैंने 2005 में स्टार्ट की थी, and now it is running successfully. तो अब मैं वो सेल आउट करना चाह रहा हूँ, वो कंपनी पूरी की पूरी. तो मैं उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करूंगा कि मैं कितने अमाउंट में सेल करूँ? So this basically this process, or this determining the value, current, or you can say current worth of that company, it will be called as valuation. अब इसके मुख्तलिफ मेथड्स अवेलेबल हैं, टेक्निक्स यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एसेट बेस्ड टेक्निक है, दूसरी है इनकम बेस्ड टेक्निक, थर्ड जो है मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन है. इन द एसेट बेस्ड आप की वर्थ ऐसे एस्टिमेट करते हैं कि अगर लेट्स से 2005 में एक कंपनी ओपन की थी, नाउ this was 2020, so how much investment you will need to start a company of this level? कि उसका भी 2020 में लेवल, आज के दिन में इस लेवल कंपनी आप ओपन करें तो उस पर कितना खर्चा है. तो दिस अमाउंट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट कंपनी. एक तो ये टेक्निक अप्रोच हो सकती है. दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि इनकम बेस्ड वैल्यूएशन. आप ये डिटरमाइन करें कि आज की डेट में आप एक ऐसी कंपनी, लेट्स से ये कंपनी आपके लिए 3 लाख रुपीस पर मंथ जनरेट करेगी. तो आप ये डिटरमाइन करेंगे कि आज की डेट में आप अगर एक कंपनी ओपन करते हैं जो कि आपको प्रॉफिट दे 3 लाख रुपीस पर मंथ, तो उस ऐसी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? तो that will be the worth of that company. And third is the market based. मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, या मार्केट में अगर सिमिलर जो है कंपनीज हैं वो बाय परचेज हो रहा है उनका, तो अगर कोई कंपनी इस तरह किसी ने सेल की है या किसी ने परचेज की है, तो उनसे आप आइडिया ले लेंगे ऐसी कंपनी क्या वैल्यू है या क्या होनी चाहिए, तो उस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं. This is basically called as market based valuation. This was all about valuation. After that, this is the last topic of this lecture,
this is arbitration and litigation process. So what is arbitration and what is litigation? Litigation तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था. You remember? किसी को याद? नो सर. लिटिगेशन हिस्ट्री हमने डिस्कस की थी. प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स या प्री क्वालिफिकेशन प्रोसीजर्स में हमने किसी फॉर्म पे लिटिगेशन हिस्ट्री है ये. When there is a dispute और तनाज़ा जब होता है तो उसको हल करने के दो ऑप्शंस हो सकते हैं. या तो आप जरगा बिठाएं, ठीक है, या आप वो केस जो है कोर्ट में ले जाएं और जज फैसला करें. जब आप जरगे के थ्रू हल करते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज आर्बिट्रेशन प्रोसेस. सिंपल वर्ड. And when you are taking that issue to the court and resolve that issue into court, then this will be called as litigation. So this is the basic introduction to the arbitration and litigation. Now let's look into the definition. Arbitration involves two parties in a dispute who agree to work with a disinterested third party in an attempt to resolve the dispute. Arbitration में आपके दो पार्टीज के बीच में इशू चल रहा है, वो एक तीसरी पार्टी जो कि जिसका उस इशू में कोई भी इंटरेस्ट ना हो, उसको इन्वॉल्व करके वो फैसला करवा सकते हैं. तो this process is basically called as arbitration. And litigation is very old process that involves finding issue to court with judge or jury. इसमें judge involved हो जाता है या jury involved हो जाती है. In this case, we are talking about the civil litigation disputes between two parties, not the criminal cases. ठीक है? अगर दो बंदों के बीच में आपस में कोई फैसला नहीं हो पा रहा, उस तरह के जो डिसीजन होते हैं, तो उनके लिए बात करें. हम क्रिमिनल लिटिगेशन की बात नहीं करें. Nowadays, arbitration and litigation processes, they have some advantages or disadvantages. So let's discuss these things. So first aspect of the pros and cons of these litigation and arbitration process are public-private formality. तो जो arbitration process है, this is private, something private. आप बस जरगा बिठा के उसमें फैसला हो जाता है. There's nothing on the media or anything else. But when we go to the litigation process, वो सबके सामने फिर आपको सारे एविडेंस भी देने पड़ते हैं. सब कुछ जो है पब्लिक के सामने होता है. Another aspect of this comparison is the speed of the process. So when we are talking about the speed of the process, so arbitration is very quick process and it takes very short time. बस arbitration की डेट सेट करनी है. arbitrator जो है जो थर्ड पार्टी है वो डिसाइड करना है. वो जरगे की डेट डिसाइड होगी, उसी दिन फैसला होगा, बस सब कुछ प्रोसेस खत्म. जबकि लिटिगेशन में तो आप कोर्ट की डेट्स, एक फर्स्ट हियरिंग, सेकंड हियरिंग, एंड वो फिर आपके मंथ्स एंड ईयर्स लग जाते हैं उस प्रोसेस में.
third aspect of comparison is the cost of the process. So arbitration is almost free. ठीक है, में कुछ भी कॉस्ट नहीं है. अगर बहुत भी हो तो आपको थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे आर्बिट्रेटर को, या खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं. On the other side, when we are talking about the litigation process, we have to pay the court fees and the fees for the lawyer and other charges as well. में आपके अच्छा खासा पैसा भी लगता है. The fourth aspect of comparison is the selection of arbitrator or judge. So when we are talking about the litigation process, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता इस तरह के ऐसे कि आप कौन सा जज अपने लिए रखना चाहते हैं. तो ये आप शायद आपके कंट्रोल में सिर्फ ये हो कि आप you want to select a jury for decision or judge for decision. Jury is a panel, judge is only a single person. Whereas in the arbitration process, तो आप जो जज है या आर्बिट्रेटर है वही होगा जो आपका और जो दूसरी पार्टी है उस दोनों का उस पर एग्रीमेंट हो, आप दोनों उस पर ट्रस्ट करते हो, तो वही आर्बिट्रेटर होगा. तो वो आपके कंट्रोल में. The fifth aspect of comparison is use of attorneys. As we know very well that the arbitration process इसमें कोई वकील वगैरह नहीं होता, जिरगे में कोई वकील वगैरह नहीं होता, जबकि आपकी लिटिगेशन प्रोसेस में आपको लॉयर हायर करना पड़ता है, उसकी फीस वगैरह भी देनी पड़ती है. They have to collect the evidences, etc. Then another aspect of comparison is the evidence which are allowed. So arbitration process में as such evidences का होता है नहीं होता, लेकिन आर्बिट्रेटर जो है कंट्रोल करता है कि क्या एविडेंस आपको अलाउड है डिस्प्ले करना, कौन सा नहीं है. जबकि लिटिगेशन प्रोसेस में तो आपको तमाम एविडेंस जो है वो एक्सपोज करने पड़ते हैं. यू हैव टू अनकवर ऑल ऑफ द स्टोरी और ऑल ऑफ द एविडेंसेस. Last aspect of comparison is the availability of appeal. So when you are talking about the arbitration process, so there is no concept of appeal or second appeal or appeal in the high court or any other arbitrator. So but when you come to the litigation, तो आप अपील कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में अगर आपको आपके अगेंस्ट आता है डिसीजन, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. तो इस तरह वहाँ पे आप अपील कर सकते हैं हर लेवल पे. तो these were some of the basic differences between this arbitration process and litigation process. And by this we can conclude our today's lecture as well as our written board. If there is any question, you can please ask. No, sir. No, not as such. No question, sir. No